Salt hydrolysis. This is the next part. So we will discuss salts. Already we have discussed acids and bases, but we have not discussed salts. So we will start with salts today. And let us understand the different types of salts. Before understanding the different types of salts, some other basic things regarding hydrolysis need to be understood. Now, what is hydrolysis? Before that, we should know the particular term. Yes, what is hydrolysis? How do you define hydrolysis? Hydro means? Sir, reaction of any substance with water. Reaction of a substance with Sir, in this water. case, a salt. Reaction of a salt with water. Okay. Right. Fine. So hydrolysis is a particular type of reaction where water is the reactant and water reacts with a particular species. As a result of that, now this is an important part. After the reaction, you obtain two or more than two products. What I'm trying to say is that it is not like this. For example, you have, this is a compound, right? This is a compound. You react it with water and you get this. This is not hydrolysis. Why? Why is this not hydrolysis? It should be reversible. No. There should be at least two products found. If and only if you obtain two or more than two products, we will call that reaction with water or hydrolysis reaction. If I obtain just one product, like here I've obtained B, this is not hydrolysis. Get this thing very clear. You will need this for organic chemistry also. So this is not hydrolysis. This is not hydrolysis because you obtain only one product. So if two or more than two products are obtained, then we call it hydrolysis. Okay, that is the first thing. So that is clear, meaning of hydrolysis. Next is what? A salt contains a cation and an anion. Any salt will contain a cation also and an anion also. So in water, we don't have anything called salt because the salt has been split into its constituent ions. That is why a salt is a strong electrolyte. Any salt, irrespective of the type of salt, a salt will definitely split into its constituent ions in water. So I have two separate entities now. One is the cation and one is the anion. That means I can carry out the reaction of the cation with water. I can carry out the reaction of the anion with water if I want to show the hydrolysis. Right. So a cation of a salt may undergo hydrolysis, or an anion of the salt may undergo hydrolysis, or both cation as well as the anion of the salt may undergo hydrolysis. So it will depend on the situation. But there is a possibility that the ions may undergo hydrolysis because we have two distinct ions in water. One is cation and one is the anion. So with respect to that, we have to talk when we talk of hydrolysis. So we restrict our discussion to the ions because we want to talk about the particular ion which is undergoing hydrolysis. Now,
we also should know that all ions are not capable of showing hydrolysis. Every ion is not capable of showing hydrolysis. So that also has to be kept in mind. Because if we want to find out the hydrolysis of an ion, इक्वेशन लिखने के लिए लिख देंगे ये पानी के साथ रिएक्ट करके ऐसा ऐसा हो रहा है, बट इज इट हैपनिंग इन रियलिटी? Is it feasible? That is also to be checked. So if the hydrolysis of a particular ion is impossible, then why should we write the hydrolysis equation? Which means that we should first know which ions will undergo hydrolysis and which ions will not undergo hydrolysis. Once we know, then we can easily write the equations. So if I talk about a strong acid or a strong base, for example, if I talk about KOH. Okay, KOH is what kind of base? Strong base or weak base? Strong base. Very strong base. It's an alkali, right? So in water, we know that it will completely dissociate in this manner. The moment you write some equation for a strong base, you do not write this because the reverse process is not possible for a strong base. Hence, we can just write this. That is the first thing. This is the first thing. So just check the constituent ion coming from acid or base. So if I say, now if I ask you a question, potassium ion, that is K plus ion, is coming from which base? What will you reply? KOH. Potassium ion is coming from which base? It's very simple. You just add OH minus and you see the base. So KOH is the base from which K plus can come out, which means KOH is the source of K plus ions. So you have to identify the source of the ion. So if I ask you now, what is the source of potassium ions? Which base can provide me potassium ions? You will say that potassium hydroxide can provide me potassium ions. Similarly, if I ask you, which base can provide me sodium ions, then what will you answer? Sodium hydroxide. NaOH. Sodium hydroxide can provide me sodium ions. Okay, very good. Next, which acid can provide me bromide ions? HBr. HBr. कैसे किया ये तुमने? How did you find out this? Add H. You just Sir, added one H plus to that respective anion, right? Okay. Which acid will give you sulfate? That is SO4 minus. H2SO4. H2SO4. H2SO4 can give you sulfate. So identifying this way is very important because once you identify this, then we can proceed. Okay, any doubt in this? Sir, आपने वो क्यों बोला था कि A plus H2S if it gives B then it is not hydrolysis? आवाज नहीं आ रही है. हेलो. हाँ अभी ठीक. हाँ. हाँ सर, आपने वो क्यों बोला था कि अगर if A plus B gives if A plus H2O gives B then it is not an hydrolysis reaction? बिकॉज हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन ये है कि पानी जाके एक चीज को तोड़ता है और दो अलग अलग कंपोनेंट्स हिस्सों में प्रोडक्ट्स को ये कर देता है. मतलब दो अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे प्रोडक्ट में. अगर ए प्लस वाटर गिविंग बी होता है मतलब उसने ए को तोड़ा नहीं है, उसने ए के जाके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, तो उसको हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं. तो necessarily ions में ही तोड़ना चाहिए कि दो अलग अलग कुछ भी हो सकता है. इन जनरल आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट. अगर मैं ऐसा कोई तुमको एग्जांपल दिखाऊं तो तुमको क्लियर हो जाएगा. अगर मैं तुमको ऐसा कोई दिखाऊं कि ऐसा कुछ है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, राइट. अब ये रिएक्टेंट पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके, ऐसा कुछ है, और प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारा ये. Now tell me, can I say this is A plus H2O giving B? ऐसा ही हुआ ना ये? This is not hydrolysis.
this is not hydrolysis. Then what is this? This is called okay, which means hydrolysis अगर कहलाएगा कोई रिएक्शन उसमें दो प्रोडक्ट्स तो होने ही चाहिए. Okay, at least two products must be found. Fine. So now you have to identify the source of ions, which you have done already. You have to identify the acid from which the negative ion is coming, or you can identify the base from which the positive ion is coming. ये बहुत ही important चीज है. Okay, now if I tell you, I'll show you now two things. First, इसको ध्यान से देखो. Okay, this reversible reaction wherein H plus and OH minus are combining to give water. Reversible reaction. Why do we know that it's a reversible reaction? Because we know that H2O giving H plus and OH minus is a reversible reaction. So H plus plus OH minus giving H2O is also a reversible reaction. Right. So this is what we know. Now I'm writing another reaction. यहाँ तक clear हो गया सबको? I've written these two reactions. Observe these two reactions. In the first reaction, I can write a reversible symbol. I can put two arrows. But in the second reaction, I cannot put two arrows because HCl is a strong acid. HCl dissociates completely and the reverse process does not happen at all. So I'm supposed to put a single arrow. यहाँ तक clear है? Okay. अब थोड़ा मैथमेटिक्स से अलजेब्रा का अगर यूज करेंगे. Tell me now, what should happen if I add 1 and 2? H plus कैंसिल हो जाएगा. नहीं वो ठीक है. तुम मुझे पूरा बताओ क्या मिलने वाला है. एरोस के साथ बताओ. वो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. क्या होगा अभी 1 plus 2 को किया तो? If I add these two equations, what should happen? How should I write the resultant? HCl plus OH minus. HCl plus OH minus. Okay, because you have added the left hand sides of the two equations. Fine. अभी आगे क्या? H2O plus Cl minus. H2O. एरो मार के फिर H2O plus Cl. H2O plus Cl minus. ये तुमने राइट हैंड साइड बताया. अब बीच में एरो का क्या? What happens to the arrow? सर रिवर्सिबल वाला होना चाहिए ना. कैसे? रिवर्सिबल होना अभी चाहिए. हाँ. ऐसा होगा ना. अभी सर, देखो क्योंकि अगर एक कंपाउंड भी इरिवर्सिबल हो गया तो फिर पूरा रिएक्शन है. एग्जैक्टली. तुम अगर दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो, दोनों के दोनों रिवर्सिबल है, तो ही रिजल्टेंट रिवर्सिबल आएगा ना. एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है. Then how can you add them? I mean, you can add them, but you cannot write a reversible symbol because one is reversible and the other one was irreversible. So दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो irreversible हो जाएगा. ये क्लियर हुआ? क्योंकि ये चीज जो है सेकंड इक्वेशन में तो सिंगल एरो है ना. अगर सेकंड इक्वेशन में सिंगल एरो है तो हाउ कैन आई राइट डबल एरो इन द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन है. कौन सा पार्ट कॉमन है दोनों में? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कॉमन है दोनों में. रिवर्स वाला डायरेक्शन कॉमन नहीं है. वो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के लिए रिवर्सिबल सिंबल था. Which means the resultant will have only that part which is common to both the individual equations. So the single arrow is common to both the equations. The backward arrow is not common to both the reactions. Backward arrow is only for the first reaction. Second reaction में कोई backward arrow नहीं है. आप जब add करोगे दो equations को तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या चीज common है दोनों में, वो आएगा resultant में. Fine. So that is why I gave this example. अभी
इसका मतलब जो 1 + 2 करके दिखाया है, कैन आई राइट दिस इन अनदर मैनर? कैन आई राइट दिस इन दिस वे? अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। 1 + 2 को देखो पहले, ये है 1 + 2. Now can I say this H2O plus Cl minus ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये केमिस्ट्री में एक तरीका होता है ऐसे भी लिखने का. This is also one way to write the. This is one way to indicate that something is not happening. Arrow मार के arrow के ऊपर cross. So get this thing very clear. तो ये वाला प्रोसेस होता नहीं है. Can I say इसको देख के that Cl minus is not getting hydrolyzed? Yes sir. Yes, that is the conclusion of these two equations. 1 and 2 को ऐड करने के बाद जो आया उसको देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि Cl minus does not undergo hydrolysis. In a similar manner, I can conclude or I can infer. तो फिर तो बस weak acids या weak bases के लिए. Exactly. So I can conclude that जो भी ion strong base या strong acid से आता है, that is incapable of undergoing hydrolysis. So Cl minus, Br minus, I minus, SO4 2 minus, ClO4 minus are all incapable of showing hydrolysis because these all are coming from strong acids. Similarly, Na plus, K plus, Rb plus, Ba2 plus, Ca2 plus are all incapable of showing hydrolysis because these are coming from strong bases. So that is the first thing. Hydrolysis कौन दिखा सकता है, कौन नहीं दिखा सकता है, ये हम लोगों ने इक्वेशंस मैथमेटिक्स को देख के किया. राइट, फाइन. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि कौन हाइड्रोलिसिस कर सकता है, कौन हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता है. नाउ कमिंग टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. एक सॉल्ट के अंदर कैटायन और एनायन दोनों है. अब डिपेंड करेगा कि कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, उसके ऊपर हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिख सकते हैं. तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखने के लिए we must know the components present, that is the ions present in a particular salt, and वो आयन कहां से आता है, कौन से एसिड से आता है और कौन से बेस से आते हैं, वो दो आयंस का सोर्स पहचान के ही हमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखना है. So for example, now tell me, I'm asking you a question. If I ask you that okay, question is this: will F minus undergo hydrolysis? Yes sir. Yes sir. Will F minus undergo hydrolysis? If yes, why? Sir, it क्योंकि वो will weak acids है ना. कौन सा एसिड से है? HF. HF से आता है F minus, यानी F minus हाइड्रोलिसिस कर सकता है. Very good. Tell me the products of hydrolysis. HF and OH minus. Yes. This is going to be the product. These are the products of hydrolysis. Is this clear? और हाँ, बीच में डबल एरो लिखना जरूरी है. हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ऑब्वियसली वो रिवर्सिबल है. Right? Okay. Next. Can NH4 plus undergo hydrolysis? Yes sir. NH4 plus can undergo hydrolysis. Yes or no? Yes sir. Why? Yes sir. NH4 It is a weak. NH4OH weak base. NH4 plus कहाँ से आता है? NH4OH से मिलता है.
NH4OH किस टाइप का बेस है? वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। सबसे ज्यादा वीक बेस कॉमन एग्जांपल इसी का है जब भी हम लोग एग्जांपल्स लिखते हैं वीक बेसिस के, तो NH4OH is the first one which is always explained. Okay, very good. So this will also undergo hydrolysis. If I want to write down the products of hydrolysis, then how should I write now? NH4OH plus and H3O. NH4OH plus ये आ जाएगा plus H plus. these are the products of hydrolysis of NH4 plus. तो मतलब आप हाइड्रोलिसिस के लिए ऐसे रिएक्शंस लिख सकते हो, all are reversible reactions. Okay, very good. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब थ्योरी पे आते हैं। An ion of a salt may react with water to establish an equilibrium. Yes, that is what we did just now. NH4 plus plus H2O, F minus plus H2O. These all are establishing equilibrium with water. That is the hydrolysis reaction is happening. Then the phenomenon of reaction of one or both the ions of a salt with water is called hydrolysis of the salt or salt hydrolysis. मतलब क्या? आप ये नहीं बोलोगे कि सॉल्ट रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, आप ये बोलोगे कि आयन रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ. So be very particular when you're defining this. You will have to mention the word ion. Don't say that the salt is reacting. Say an ion of the salt is reacting with water. Which ion is it? Will depend on the nature of the salt. But yes, it is actually ionic hydrolysis. Rather than calling it salt hydrolysis, we should call it ionic hydrolysis. Right. एक आयन हाइड्रोलाइज हो रहा है. So now since you have already understood the meaning of hydrolysis and now you have read the second point under this, I'm going to ask a question. Read the second point first. Fine. Now the question to you is that in Ki, now Ki is a salt. So which part will undergo hydrolysis? Ki में से क्या हाइड्रोलाइज करेगा? सर दोनों करेंगे ना? दोनों करेंगे तो क्या होगा फिर? सर HI एंड श्योर? सर के नहीं करेगा क्योंकि K नहीं करेगा, सिर्फ बस I strong करेगा. base से। K स्ट्रॉन्ग बेस से आता है ना. दोनों ही नहीं करेगा ना, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है ना. तो HI भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? एज पर योर नॉलेज ऑफ periodic acid. So this will not undergo hydrolysis because K plus is coming from KOH, I minus is coming from HI. HI is a very strong acid and KOH is also a very strong base. Then why will Ki undergo hydrolysis? It cannot undergo hydrolysis. So Ki will not undergo hydrolysis. Extending the concept, can I say NaCl, NaBr, NaI, RB, CSBr? So these types cannot undergo hydrolysis. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. सबका सेम कंसेप्ट होगा. एनालॉजी मैंने की, राइट? एनालॉजी को एक्सटेंड किया मैं. यस, राइट, वेरी गुड. सर मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. सॉल्ट न्यूट्रल होता है, वो दिखाएगा नहीं हाइड्रोलिसिस. हाँ हाँ. Okay, now if I ask you, what about this? नहीं दिखाएगा नहीं सर. दिखाएगा. नहीं दिखाएगा. दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? सर नहीं दिखाएगा. नहीं दिखा. नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा. This cannot show hydrolysis.
Why? NaOH and HNO NaOH are strong. NaOH is a strong base, soda बोलते हैं उसको, and NO3 from a strong acid which is HNO3. So HNO3 is a strong acid. तो कैसे करेगा फिर हाइड्रोलिसिस? राइट, तो नहीं होगा. Very good. What about this one? सर K तो नहीं होगा, CN अगर दिखाएगा सर CN दिखाएगा, करेक्ट. कैसे दिखाएगा? Sir, HCN weak acid. CN weak acid. HCN is a weak acid and KOH is a strong base. Strong. So K plus and CN minus में से ये salt कौन, इस salt का कौन सा part दिखाएगा हाइड्रोलिसिस? सिर्फ और सिर्फ CN CN minus. क्या बोलते हैं CN minus को हम लोग? anion की cation? anion. Anion. That means this salt is undergoing anionic hydrolysis. एनायनिक हाइड्रोलिसिस यानी सिर्फ और सिर्फ उसका एनायन ही पार्ट ले रहा है पानी के साथ हाइड्रोलिसिस में. उसका कैटायन बिल्कुल स्पेक्टेटर आयन है, एंड a spectator ion in chemistry is the one which does not take part in any reaction. It is present in the solution but it is not undergoing any reaction of any kind. सर So K अगर plus is a दोनों spectator weak ion. acid या weak acid और weak base है, हाँ, अगर जो हमारे पास दोनों आयन है, दोनों weak acid and weak base से आए तो दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे. We will do that today, but I'm telling, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ एक-एक करके ताकि वो आगे का पार्ट क्लियर हो जाए. राइट. एनायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एनायन दिखाएगा. तो क्या होगा? Cn minus plus H2O गिविंग क्या? गिविंग क्या बताओ अभी आगे. HCN and HCNOH minus. HCN plus the hydrolysis reaction for the cyanide ion. Right. तो ये कहलाता है anionic hydrolysis where anion is undergoing hydrolysis. What about this one? NH4 NO3. अब बताओ क्या करेगा ये? सर NH4 करेगा लेकिन NO3 नहीं करेगा. NH4 plus is coming from NH4OH, which is a weak base. NH4OH. HNO3 is a strong acid, so NO3 minus cannot undergo hydrolysis. तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस दिखाऊं तो कैसे दिखाना पड़ेगा? Okay, before that, which is the spectator ion? NO3 minus. NO3 minus is a spectator ion. Spectator ion को छोड़ देना है and सिर्फ active ion को लेना है. बताओ क्या लिखूं इसके आगे? NH4OH and H2. Which means that this is what kind of hydrolysis? Anionic hydrolysis है ये? So cation Cationic है. Cationic है क्योंकि anion इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. तो anionic hydrolysis तो बोलना गलत हो जाएगा. तो this is cationic hydrolysis. मैं जिस में बता रहा हूँ आगे का डिटेल है इसमें फाइल में, but you have to understand the concept first. All right, you have understood this. And what about this now? What about this? What about this salt? So दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे. अब दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे. अब दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे. Anionic hydrolysis will be this. This will be the anionic hydrolysis. And the cationic, you know, NH4 plus H2, giving NH4OH plus H plus. दोनों हो रहे हैं. Okay. Fine. Now, yeah.
Please start writing these things. यहाँ से लिखना चालू करो. तो इसके पहले वाले पॉइंट पहले वाले का तो I have explained. Go through them. If you want, you can write. अभी का भी लिखना है तो लिखो, नहीं तो क्या करना है देखो, बाद में लिखना है. सिर्फ अभी लिख देते हैं. हाँ लिख लो. Somebody is asking why can't iron from strong acid hydrolyze? वो तो समझा था ना मैंने. Wait. क्या पूछ रहा है? If I have these two equations, अब ये इक्वेशन तो सबको पता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर का फॉर्मेशन फ्रॉम H प्लस और H माइनस. तो इसके लिए डबल एरो मार सकते हैं. So this is a reversible reaction. If I take a strong acid, let's say I'm taking a strong acid like this. This is a very strong acid. इसका डिसोसिएशन इस तरीके से होगा. अब इसमें this is an irreversible process because a strong acid dissociates completely into its respective ions, and the ions do not recombine to give the acid. वो ions separated ही रहते हैं strong acid या strong base के. तो H plus and NO3 minus अलग अलग separate होके ही रहेंगे. तो आप ये वाला arrow नहीं लगा सकते किसी भी strong acid के लिए या किसी भी strong base के लिए. Now this is reversible because इसमें तो double arrow लग चुका है. If I add one reversible reaction and one irreversible reaction, the resultant reaction will also be irreversible reaction. So if I add 1 plus 2, 1 plus 2 will give me this. ऐसा मिलेगा मुझे. This is the resultant of 1 and 2. If I add 1 and 2, I'll get this. Now, the important point here is that if I'm adding 1 and 2, this arrow is for reversible reaction. This arrow is for irreversible reaction. तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट भी जो कॉमन वाला पोर्शन है वो लेना पड़ेगा. कॉमन वाला कौन सा है दोनों रिएक्शंस में? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है. ये इसमें भी है और ये इसमें है, यानी दोनों में जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो आपका कॉमन है. तो रिजल्टेंट में भी जो कॉमन है वही आएगा, व्हिच इज दिस. बैकवर्ड वाला तो सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन में है, सेकंड रिएक्शन में बैकवर्ड वाला नहीं है. तो ऐसा हो जाएगा. अब ऐसा आ गया मतलब आई कैन से सिंगल एरो मतलब इरिवर्सिबल, तो इसका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा. एरो के ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया. Correct. Now is it clear? Okay, fine. Now okay, fine. Write down. Start writing.
ओके नेक्स्ट हो गया यहाँ तक. Done. Yes, sir. Okay. Now write this point. Okay, next part. Types of salts. There are 4 categories of salts, which we have already discussed. 2 examples, right? Now we will do the theory. पहला वाला कौन सा है? जो KCl, KBr जैसा लिया था वैसा. A salt which is formed by reaction between a strong acid and a strong base is a neutral salt. Such a salt does not undergo hydrolysis. Write down. Such a salt does not undergo hydrolysis. मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ना ही उसका कैटायन हाइड्रोलाइज होता है, ना ही उसका एनायन हाइड्रोलाइज होता है. No ion will undergo hydrolysis, and that is why we see that the salt does not undergo hydrolysis. किस टाइप का salt है वो? A salt which is formed by reaction between a strong acid and a strong base. So this is the first category of salts. A few examples of salts of this category are these, which we have already discussed.
ओके डन हो गया यहाँ तक लिख के। यहाँ तक हो गया। हाँ सर। हाँ प्लीज राइट डाउन प्रॉपर्ली ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ तक। आई मीन टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में हर सेकंड कैटेगरी में जाते हैं। Going to the second category, let us discuss the pH of such a salt. Of first category, क्या होना चाहिए pH? 7 सोल्यूशन का pH 7 होना चाहिए क्योंकि वो न्यूट्रल है पूरी तरह से, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं है, तो एग्जैक्ट 7 आएगा। Now we go to the second category of salts. This is the second category of salts. मतलब क्या? A salt which is formed by reaction between a strong base and a weak acid is a basic salt. We discussed anionic hydrolysis where the anion was undergoing hydrolysis. So यहाँ पे ऐसा होता है, इस कैटेगरी में एनायन सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करता है। कौन सी कैटेगरी है ये? सेकंड कैटेगरी। मींस व्हाट? सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा सॉल्ट जो बना है रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड से। Examples of salts of this category are ऐसे कुछ examples: CH3COONA, HCOOK, KCN, CH3CO whole twice Ba. These all are examples of this category. Okay, now
I'm giving you a slight task based on this. कोई भी ऐसा सॉल्ट जो है सेकंड कैटेगरी का, यानी ऐसा जिसमें बेस स्ट्रांग हो और एसिड, उसके लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो हम लोग को याद करने पड़ेंगे. बट बिफोर दैट आई वांट यू टू ट्राई द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. उसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं. हाँ, ये वाला आपका ये है क्वेश्चन है. अब कोशिश करो, यहां से मैं हिंट दे रहा हूं. अब इसको आगे कंप्लीट करने की कोशिश करो. सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हैं क्या? ओके, ये हिंट है. पहले ये ट्राई करो, उसके बाद विल गो बैक टू द थ्योरी. ये समझना जरूरी है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं. See, you don't need to know derivation for JEE, right? But just to have a clarity, because ये डिराइव करने के लिए टाइम जाएगा थोड़ा, तो हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है. लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अभी पहला है, इसलिए ये वाला डेरिवेशन आप ट्राई करो, सिर्फ ये वाला. स्मॉल एच मैंने यूज किया है, अल्फा के बदले में यहाँ पे मैंने स्मॉल एच यूज किया है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना. ये इक्वेशन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अभी. दिस इज anion because undergoing hydrolysis. तो अल्फा नहीं लिखेंगे, अभी एच लिखेंगे, स्मॉल एच. स्मॉल एच इज कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जस्ट लाइक यू हैव अल्फा फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो वैसे A माइनस किस हद तक, किस एक्सटेंट तक हाइड्रोलाइज हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने स्मॉल h का यूज किया है. सो h इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. C is the molarity or the concentration of A minus coming from NaA. तो Na से कितना A माइनस आ रहा है, उसको हम लोगों ने C माना है, C मोल्स पर लीटर. अब आपका ये काम होगा कि इसको आगे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो और फिर pH निकालो. You know that pH is equal to 14 minus POH at 25 degrees Celsius. So पहले POH आप निकालो, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस हो रहा है, तो सब कुछ आप POH के हिसाब से निकालो और फिर 14 माइनस POH कर दोगे तो आपको pH मिल जाएगा. So this is the hint. Now start working. I'm giving you 5 minutes.
Okay, so after this what next? ये लिख सकते हैं हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्मॉल h. सर वो pH ढूंढना है ना बस. हाँ सर फिर डायरेक्ट OH माइनस का माइनस लॉग ले लेंगे. नहीं, दैट इज ओके, बट h का वैल्यू नहीं है ना. आई मीन जो नोन चीज है उसके हिसाब से करना है ना. Ka देखो क्वेश्चन में दिया है ना, जो अच्छा क्वेश्चन में सर दिया K के टर्म्स में आना चाहिए क्या? के टर्म्स में आना चाहिए. देन योर दिस थिंग K, हाँ K मतलब दिस dissociation constant of HA, right? And also it should be in terms of C, because C question में दे के रखा है. You cannot express in terms of small h. H को हटाना है in short. ओके सर. अब करो करो कोशिश. करो. C and K. तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते ऊपर हैं. क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन. करो कोशिश करो. What next? सिर्फ KH में हम लोग वो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं. Okay. सर फिर H की वैल्यू निकाल सकते हैं K और C के टर्म्स में. Okay. So देखो करो फिर फाइनल आंसर क्या है. सर 14 प्लस लॉग अंडर रूट KH इंटू C. Then after that सर उतने ही है. 14 के बाद क्या है. प्लस लॉग ऑफ KH by C अंडर रूट. हाँ तो केच नहीं रख सकते ना, वही बोल रहा हूँ ना.
फाइनल आंसर में C और K हो सकते हैं बट KH और H नहीं हो सकते। जरूर सर आंसर 14 प्लस लॉग हाफ लॉग C प्लस हाफ लॉग K है क्या? close enough but not fully correct. Right. ऐसा कर सकते हैं। ये भी इक्वेशन है ना। फर्स्ट इक्वेशन दिखा सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट वन, हाइड्रोलिसिस वाला। तो OH माइनस यहाँ पे पैदा हुआ फर्स्ट इक्वेशन में और HA भी थोड़ा सा पैदा हुआ इस इक्वेशन में। तो HA थोड़ा डिसोसिएट कर जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, थोड़ा सा ही होगा बट होगा। और साथ ही साथ ये वाला इक्वेशन भी है वाटर का डिसोसिएशन, वो भी बहुत थोड़ा सा ही है बट होगा। सर अगर हम डिवाइड करते हैं, हाँ अब क्या होगा बोलो। कैन आई से 1 + 2 = 3? राइट और नॉट? 1 + 2 = 3। सब लोग चेक करो 1 + 2 = 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज 1, this is 2, and this is 3. सर थोड़ा ऊपर लो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। Right? So 3 is equal to 1 + 2. अब हो जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं अगर इक्वेशंस को ऐड किया जाता है तो? प्रोडक्ट में प्रोडक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो KW will be equal to KH multiplied by Ka. What is KW? इक्वेशन 3 के लिए KW है ना, एंड इक्वेशन 1 के लिए KH है। इक्वेशन 2 के लिए
Ka है, तो इसके लिए ये लिख सकते हैं हम लोग 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एंड thus Kw इज इक्वल टू KH इंटू K, और KH is equal to Kw upon K. As I said, I cannot keep KH in my final equation. So KH has been written as Kw upon K. And from 1 KH is equal to CH square upon 1 minus H, तो उसको CH square ही लेना है. हाइड्रोलिसिस बहुत कम अमाउंट में होता है. अब क्या, ये KH के बदले में CH square लिखेंगे यहाँ पे in this, so CH square will be Kw upon K. On solving this, H can be expressed in terms of the known parameters. And OH माइनस कितना था, CH, ये है OH माइनस, so OH माइनस इज नथिंग बट इक्वल टू CH. CH जो है वहां पे मैं H के बदले में ये चीज लिख सकता हूँ जो H निकाला है. करेक्ट. तो OH माइनस आ गया इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर्स, दैट इज Kw, C एंड K. अब मैं POH निकाल सकता हूँ. POH इज व्हाट, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग यूज करोगे यहाँ पे. फिर ये जो माइनस साइन है ना हाफ के पहले, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया. पूरा जो माइनस साइन है वो ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के पहले लगा दिया. तो ये मिल जाएगा फिर. करेक्ट, ऐसा हो जाएगा. एनी डाउट? Now I can find out pH. So pH is 14 minus POH. So POH निकल चुका है, 14 माइनस POH कर देंगे तो pH आ जाएगा.
Now pKw is nothing but minus of log Kw, and Kw is 10 to the power of minus 14. So pKw will be 14. Kw is 10 to the power of minus 14. So pKw will be 14. Half of pKw will be 7. So 14 minus 7 is 7. तो ये आ जाएगा फाइनली pH का आंसर 7 plus half pKa plus half log C. What is this C? Molarity of that acid. नहीं, molarity of जो सॉल्ट का हाइड्रोलाइज पार्ट है, कौन यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर रहा था? एनायन कर रहा था। तो एनायन का मोलारिटी A माइनस था ना यहाँ पे एनायन, तो जो एनायन की मोलारिटी है वो C है। फाइन। तो जस्ट टू शो यू आई गिव द डेरिवेशन, यू नीड नॉट रैक योर ब्रेन्स बिहाइंड दिस। आपको फॉर्मूला याद होना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सॉल्ट्स के, तो फॉर्मूला के बिना आप नहीं कर पाओगे। तो पीएच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कमिंग बैक टू द थियरी, देखो ये लिखवाया था मैंने यहाँ पे, so for these salts that is category number 2 हम लोग ये सब फॉर्मूला लिखते हैं, जो डिराइव किया था वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं। तो इसके लिए मैंने पहले डेरिवेशन दिखा दिया। If you want to ignore the derivation, fine, you can do that, no problem. But then these three formulae which you right now see on the screen should be on your fingertips. So these three formulae cannot be ignored at any cost. For category number 2. Category number 2 मतलब क्या? ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से बना हो। वैसे ही हम लोग कैटेगरी 3 की ओर जा सकते हैं। और 3 में क्या है? A salt formed by reaction between a strong acid and a weak base is called an acidic salt. Such a salt undergoes cationic hydrolysis. अब cation hydrolyze करेगा ऐसे सॉल्ट का। Examples क्या क्या है? These are the examples. सर वो थर्ड सेकंड एग्जांपल के बाद वाले फार्मूला नोट डाउन कर लिया। कौन सा फार्मूला? ये वाले? हाँ, ये कैटेगरी नंबर 2 के लिए है, तो वो 2 के लिए लिखो फॉर्मूले। दिस आर फॉर कैटेगरी 2। Write down the formulae for category 2. These are the 3 formulae which you should know for any salt of category 2. Category 2 मतलब क्या? ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से बना हो। सर माइनस हाफ लॉग से नहीं है? नहीं, प्लस है। पीएच है ना, पीओएच नहीं है ये पीएच है।
सब प्लस है इसमें, ऐसे याद रखो इसमें सब प्लस है कैटेगरी 2 में। नेक्स्ट, ये सब क्या है इसका मतलब यहाँ पे लिखा है। C is the initial molarity of anion of salt. Please remember this, it is not the molarity of salt, it is molarity of anion of salt. Okay, category 3, अभी ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से बना हो। Such a salt will undergo cationic hydrolysis. ऐसे एग्जाम्पल से सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? now the formula for this category.
These are the formulae for the third category. Third category means what? A salt which is formed by reaction between a strong acid and a weak base. सर इसमें CH स्क्वायर नहीं होगा, बस CH होगा. क्यों? Same thing, no? CH square by 1 minus H. अब इसमें देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पे दोनों ही माइनस, ऐसे याद रख सकते हो आप. कैटेगरी 2 में सब प्लस था, यहाँ पे दोनों ही माइनस है. Now what is C here? C is the concentration of cation of salt. अब salt मत बोलना, cation बोलना, क्योंकि यहाँ पे cation का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है. So here C is the initial concentration of cation of salt. So the last category of salts is this one. When both acid as well as base reacting are weak, so the salt will undergo cationic hydrolysis as well as anionic hydrolysis. एग्जाम्पल्स तो ऐसे हैं, फॉर्मूले यहाँ पे वापस 3 फॉर्मूले मिलेंगे. So what you can do is you can note down the formula once I send the file. Okay, complete this entire thing. I will send this file just now.
अभी मैं सम दिखा देता हूं। ये भी कर चुके हम लोग, 100 सेकंड कंप्लीट। हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, हाँ ये सम देख लो, देन विल स्टॉप। What is the pH of 0.1 molar barium acetate solution? pKa of acetic acid is 4.7. अब बेरियम एसिटेट पूछा है तो सॉल्ट है ये, दिस इज अ सॉल्ट। किस टाइप का सॉल्ट है ये? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट। तो क्या होना चाहिए इसमें? CH3CO-। एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि बेरियम तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से आता है, तो वो तो हाइड्रोलाइज करेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड। CH3CO- will undergo hydrolysis, which means the anion is undergoing hydrolysis. Anionic hydrolysis अगर हो रहा है तो 7 + ½ K हो जाएगा। जो हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था वही होगा एग्जैक्टली। बट यहाँ पे जो आप फार्मूला लगा रहे हो 7 + ½ pK + ½ log C, यहाँ पे C का ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये 0.1 को ही C ले लेते हैं। दिस इज अ मिस्टेक, वेरी कॉमन मिस्टेक। Why can't you take 0.1 as C? C तो anion का है ना। हाँ, C is the molarity of the anion, and anion is acetate. CH3CO- is called acetate. कहां से एसिटेट आएगा? ऐसे में बेरियम एसिटेट को इस तरीके से दिखा सकता हूं। Concentration of barium acetate is given in the question as 0.1. इसका 0.1 देके रखा है उन्होंने। पॉइंट 1 मोलर बेरियम एसिटेट सोल्यूशन दिया है, तो फिर एसिटेट का कितना होना चाहिए? 0.2। एग्जैक्टली 0.2, बिकॉज 2 × 0.1 हो जाएगा। 2 × 0.1 हो जाएगा एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन। So 0.1 molar is not the concentration of acetate. 0.1 molar is the concentration of the salt. Concentration of acetate ions will be 2 times the concentration of salt, because here you see coefficient as 2. तो ऐसा हो जाएगा। This is C. Now I can put the values. 7 + ½ pKa + ½ log C. ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है, यानी सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट। तो C का वैल्यू 0.2 आ जाएगा, बिकॉज 1 mole of barium acetate gives 2 moles of CH3CO-. Therefore 0.1 molar barium acetate will give 0.2 molar CH3COO-. जहां से आ जाएगा वैल्यू, आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ओके, तो आई विल सेंड द नोट्स नाउ। थियरी जो है वो कंप्लीट कर लेना नोट्स में।